dear students, how are you all? I wish always be well. In today's video, we will discuss about law of conservation of momentum and also about the application of this law, and also we will solve some numericals based on this law. Okay, so shall we start? So be ready with your pen and copy and let's do it. Okay, so now law of conservation, what it states that what is the application of this also I will explain so that you will understand what is the use of this law in our daily life. Okay, so first of all I am going to write it's a statement that is what according to this law, according to this law, the total momentum of any system of objects is conserved before and after collision. Okay, so according to this law, the total momentum of any system of object is conserved before and after collision. Another statement of this is, or another statement is this side I'll write, this side, the another statement of this, that the momentum of any system of object is before collision is equals to after collision. Okay, so momentum before collision is equals to momentum after collision. System of body means what? If two balls are moving like this, na, in opposite direction they are moving, when they will collide, na, they will collide, and after collision, before collision, what was their momentum? Means not momentum of one body, of the two bodies. System means what? The two bodies which you have considered. Okay, the momentum of these two bodies before collision is what? The sum of that is equals to momentum after collision of those two bodies. बॉल जो बॉल लिए हो, ये बॉल है, ये बॉल है, दोनों मूव कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे हैव सम मोमेंटम. Okay, so after collision, na, they will collide definitely. Okay, after that they will have some momentum. Okay, so before collision also they had momentum, and after collision also they have momentum. So both the sum of both the momentum before collision, that must be equals to momentum after collision. This is the law of conservation of momentum, which is practically found. Okay, so we will understand it by some examples also in application of this law of conservation of momentum. Okay, now first of all we will derive this law. Okay, so and in mathematically how you can write it? You can write like this: m1 u1 plus m2 u2, that is equals to m1 v1 plus m2 v2. डरो मत इस इक्वेशन से, समझ में आ जाएगा इक्वेशन व्हेन वी विल डिराइव. Okay, now it is not clear, I understand, but when I will explain it, na, it will be definitely clear. Okay, so I am removing this side. Now going to derive it. Okay, so what is the proof of this law? So by Newton's second law of motion, we know force is equals to P2 minus P1 upon T.
by Newton's second law of motion. So don't write first. First you write, draw one diagram. Here, one diagram I am drawing. Suppose two balls are there, one ball and second ball. Okay, suppose this ball is moving this side and this ball is moving this side. Suppose this ball has mass m1 and this one has m2. Initial velocity, with what velocity it has started, that is u1, and its initial velocity is u2. Okay, in different directions. Now after collision, when they collide, these two bodies has collide. Suppose these two bodies are A and B. When these collide, after collision, they have velocity. Definitely, after collision they will move in some other direction. So in that case, they have velocity v1 and v2. Okay, so they have velocity v1 and v2. Okay, now it's a v, na? v2, and obviously mass will not change. Mass is always same in universe. So m1, m2. Okay, now but their velocity has changed. Okay, so now we will derive this law. Okay, so by Newton's second law, we know F is equals to P2 final momentum minus initial momentum upon T. Okay, so P2 minus P1 upon T. Okay, now this side I'll write P2 minus P1 upon T. Now this force for the first body I am writing, for the first body, here I am writing force by A on B. Force by A on B. Okay, what the force applied by A on B, that is equals to what? Change in momentum, final momentum, that is m1, mass of the first body, velocity v1. Okay, m1 v1, see, initial velocity is u1 u2, mass is m1 m2, final velocity is v1 and v2. So definitely velocity, the velocity of first body, this body is what? v1. So momentum equals to what? Mass into velocity. So final momentum, see, like this I will write so that it feels better to you. P1 upon P2 into T, you know this formula. Now since we are discussing about the force on A, so definitely we will take mass and velocity or momentum of the first body, that is A. So I will write mass into velocity of the first body. Final momentum is what? Mass of the first body and final velocity of the first body. What is the change in momentum of the first body? So that is equals to m1 v1. Okay, now initial mass, final initial momentum equals to what? Mass of the first body and initial velocity of the first body, that is u1. Understood? Divided by T. You can understand this law only if you have studied the earlier topics. Then only you can understand this one. Okay. So m1 v1 minus m1 u1 upon T. So FAB equals to force by A on B, that is equals to this much. Now force by B on A, because since there are action and reaction, if one ball is applying force on B, then B also is applying force on A. Okay. So force by A on B equals to this much. Force by B on A is also equals to m2. See, now again momentum of B, final momentum is what? m2 v2. Obviously mass into velocity, final momentum minus mass m2 and initial momentum of the second body, that is u2. Initial velocity is what? u2, mass into velocity, m2 u2. Initial condition, final condition is m2 v2. So final momentum is m2 v2 minus initial momentum is m2 and u2. That's why I have written here, and time t, because for the same time interval they are applying force on each other. Okay, so that is equals to this much. Now by Newton's third law, you know, by Newton's third law, we know action equals to reaction.
Action equals to reaction. You have studied Newton's third law. So action means what? Force by A on B. So action, force by A on action. Now force by B on A, that is reaction. So force by B on A, reaction. But in the statement what it says, for each and every action there is equal and opposite. Opposite means in opposite direction with a negative sign. Okay, so means in opposite direction. How you will show opposite reaction with negative sign? Means in opposite direction. So negative sign indicate the direction is opposite to the direction of force applied by A. Means A अगर इधर force लगा रहा, then B is applying in this direction force. Means in opposite direction they are applying force. So since force is a vector quantity, that's why we are taking the direction also. So FAB अगर इधर हमने positive माना, force का direction A, तो B उसके opposite direction में force लगा रहा, then we will take negative sign. That is, it shows that it is in opposite direction to A. Okay, so FA minus FBA. Okay, now I will remove this side and we will solve. Okay, now see, FAB equals to minus FBA. So we will substitute these two values of FAB and I have written here. Yes, FAB, value of FAB and value of FBA in this equation. So I am going to substitute it in the second equation. So this value by first, second and third, by first, second and third. So FAB, value of FAB is what? M1 V1 minus M1 U1 divided by T, that is equals to negative FBA. FBA is M2 V2 minus M2 U2 divided by T. This minus is common for both. Okay, now T is cancelled. What you got? You got M1 V1 minus M1 U1, that is equals to, minus will be multiplied with these two, so it will be minus M2 V2, and this minus will be plus when you will multiply this minus sign inside it. So minus, and this will become plus. Okay, so plus M2 U2. Okay, now I will shift the negative sign. This will shift to this side, and this one I will shift this side. So it will be M1 V1 plus this one M2 V2, that is equals to this one M1 U1. Since it has minus sign, when it will move out this side of means right hand side of the equal sign, then it will be plus. Okay, you know, then M2 U2. So this is the momentum, final momentum of the system. Okay, momentum of the system after collision, because after collision this was the velocity, this was the mass. So momentum after collision means of the system, दोनों bodies का जो momentum था बाद में, that is equals to sum of the momentum before collision. देखो ये भी तो momentum of the first body, momentum of the second body, means total momentum of the system, मतलब दोनों bodies का total momentum कितना है. और ये क्या है? पहले, before the collision, and it is after collision. Okay, so तुम इसको लिख सकते हो momentum after collision. Okay, that is equals to momentum before collision. Okay, so this is the law of conservation of momentum. I think it is clear to you all. Okay, now I am moving for the numerical. Okay, so I am removing it. I hope it is clear to you all. Now I am taking some numerical related to application. I will write some application of this law. But before that we will solve one numerical. One numerical I am taking. Okay. One numerical is given in your book. So law you have derived na, M1 V1 plus M2 V2 equals to M1 U1 plus M2
u2. So this is the momentum after collision, that is equals to momentum before collision. One question I am taking. Okay, question is from your book. I am taking, find the recoil velocity of a gun having mass equal to 5 kg if bullet of 25 gram acquires the velocity of 500 meter per second after firing from the gun. Okay, so we need to find what is the recoil velocity after collision. Okay, so now see, find the recoil velocity of the gun having mass. Recoil velocity means what is the velocity after when he fired the bullet. After that he experiences a force in backward direction, means गन बैक साइड में जाती है. सो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स. देखो क्या होता है, गन पहले मैं चीज समझा देती हूँ इस एग्जांपल को कैसे. देखो गन होती है, जब वो फोर्स मोमेंटम क्या होता है, बुलेट और गन दोनों का क्या होता है, कंजर्व होता है. पहले मोमेंटम क्या होता है उसका, जीरो होता है. क्यों? बिकॉज बोथ हैव मास एंड वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू जीरो. Okay, wait, I will explain it in application only, otherwise you will be confused. Up to here it is this question you read. First of all we will solve this question and after that I will explain how it works. Okay, now see, find the recoil velocity of the gun having mass equal to 5 kg. Okay, so gun has mass of the gun equals to what? Mass of the gun is 5. Okay, so I can write here m1 equals to 5. Okay, now m2 equals to how much? M2 mass of the coil, that is equal, mass of the bullet, that is equals to 25 gram. 25 gram means 25 upon 1000 kg. Since I am converting this gram into kg, means you will divide. When you convert 1 kg equals to then 1000 gram. But if you want to convert 1 gram equals to how much kg, then you will divide 1 upon 1000 gram kg. Okay, so if I am converting this gram into kg, I will divide by 1000. Okay, so now let's solve it. See, so m1 is 5, m2 is 25 gram, that is 25 upon 1000, that is 0.025 kg. Okay, now another thing is given in the question is acquires the velocity. If bullet of 25 gram acquires the velocity of 500 meter per second after firing, means velocity of this bullet is what? V2 is what? It is 500 meter per second. See, u1 is how much? 0. u2 is how much? 0. Why? Because initially both were in rest na. Coil is also bullet is also was rest, bullet was also in rest and gun was also in rest था ना. दोनों रेस्ट में था, पहले तो कोई मोशन नहीं था उसमें. बट लेटर द वेलोसिटी ऑफ द गन, दिस बुलेट इज गिवन 500 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ द गन इज आस्क्ड.
कि जब वेलोसिटी जब वो मूव करेगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे v1 लिख लो ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो. सो v2 द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज गिवन, बट गन भी कुछ बैक साइड में मूव करेगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन मोमेंटम. तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कितना मूव करा, विथ व्हाट वेलोसिटी इट इज मूविंग ना, वही हमको फाइंड करना है. ठीक है. सो u1 is 0, u2 is 0 given in the question. Okay, mass is given, velocity is given, then we can substitute all these values in this equation and can find the value of that v1, means the recoil velocity of the gun. Okay, so I am going to write the values m1 v1 plus m2 v2, that is equals to m1 u1 plus m2 u2. Okay, so m1 is 5 into v1 is how much, v1 is we don't know v1. v1 we need to find what is the velocity of gun in backward direction. So recoil velocity of bullet plus m2 is 25 gram, that is 0.25 kg. सारे एक ही यूनिट में रहने चाहिए ना, तो ये kg में है तो this one also should be in kg, so 2.5 kg. Now into velocity of v2, velocity of bullet is 500, that is equals to m1 is 5 into 0 plus m2 is 0.025 into 0, so total term will be 0, this side term will be 0. Now what you got 5v1 plus this will be multiplied and you will get 1.25, 12.5. Okay, that is equals to 0. Now 5v1 equals to 12.5. Now v1 equals to 2.5 meter per second. Okay, so recoil velocity is what, 2.5 meter per second. So this is the velocity, understood? So the bullet, when you will fire the bullet, then the bullet will move with 500 meter per second velocity, but the gun will experience that velocity is minus 2. This is minus, na? See, this side, if it will move, it will be minus. This minus sign indicate that the velocity of the gun is in opposite direction to the direction of velocity of the bullet. बुलेट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, बट गन क्या है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है. तो ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी उस बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. अंडरस्टूड? सो इट इज शोइंग ओनली दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग ओनली द डायरेक्शन इज ऑपोजिट. अंडरस्टूड? तो फिर से हम सब क्वेश्चन को समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में बुलेट का मास, गन का और गन का मास दोनों दिया हुआ है, and velocity is also given of bullet, and we have to find the velocity of what is that velocity, recoil velocity of the gun, जो backward direction में कितना मूव किया. So initially both were in rest, इसीलिए हमने क्या किया, u1 and u2 was 0. तो u1 u2 हमने क्या किया था कि 0 रख दिया था, है ना. And m1 m2 is given this much. I have converted this gram to kg. After that what I have done, velocity of gun is asked in the question, and v2 is what, 500 meter per second. उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. फाइनली वी हैव सब्स्टिट्यूटेड ऑल दीज वैल्यूज एंड गॉट v1 equals to minus 2.5 meter per second. This minus sign indicate that the velocity of the bullet is in opposite direction to the direction of motion of the bullet. Okay, so up to here I think it is clear. Now I will explain some application of this law. You can solve some more numericals based on it and can ask in live classes. Okay, now I will write some application. While firing, I'll write application of sorry, application of law of conservation of momentum. Okay, law of conservation of momentum. So what are the applications that I will find? First, the first law, first application, while firing gun should
be held tight. So while firing, gun should be held tight. Why? Because if it will not held tight, then it will because of the recoil velocity, the person will fall down. Okay, so gun should held tight due to momentum, change in momentum. Okay, second is firing the rocket propulsion is also based on this law. Based on this law. Some more examples are also there. I'll explain all the terms, all the application I'll explain. Don't worry. Now see, up to your third you write down. Third is you can write, for example, boat also. So when person jumps from boat also moves in opposite direction to the direction of person's motion. Okay, so these are the examples, applications of daily life application of this law of conservation of momentum. Like rocket works on the rocket propulsion is based on this law. How? When the gases, when fuel burns, gases falls down, their momentum is changing. Earlier both were in rest. देखो कैसे मैं समझती हूँ, जैसे कि तुम बुलेट का एग्जाम्पल समझाती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. देखो पहले क्या था, मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम था, यू नो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. ओके, इनिशियल फाइनल बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम. अब देखो क्या था, पहले जो दोनों बॉडीज थी, गन भी और बुलेट भी, बोथ वेर इन रेस्ट. अगर रेस्ट में है दो बॉडीज, कोई भी बॉडी रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू 0. और अगर वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है लिख लो, u इक्वल्स टू 0 है, तो मीन्स मोमेंटम p इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू यू. सो मास तो कंजर्व होता है, बट योर वेलोसिटी इज 0, इट मीन्स टोटल मोमेंटम इज 0. गन का भी मोमेंटम 0 है एंड बुलेट का भी मोमेंटम 0 है, तो दिस टर्म इज 0. ओके, दैट इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, बुलेट का मोमेंटम इनिशियल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 ना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, m2 v2. नाउ सी दिस टर्म इज 0, पहले उसका पूरा मोमेंटम क्या था, 0 था, है ना, टोटल, क्योंकि बिकॉज बोथ हैज द इनिशियली बोथ वेयर इन रेस्ट, तो दोनों ही रेस्ट से में थे, सो दैट्स व्हाई द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0 ऑफ द सिस्टम. नाउ द फाइनल मोमेंटम इज नॉट 0 ना, सो वी विल राइट हियर दैट इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, नाउ सी m1 v1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस negative of m2 v2. can you see this momentum? देखो अगर पहले मोमेंटम 0 था, बाद में दोनों के मोमेंटम में चेंज हुआ, इफ देयर इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ, तो दोनों का मोमेंटम ऐसा होना चाहिए कि फाइनली उनका जो मोमेंटम हो वो 0 हो जाए, दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाए वो 0 हो जाए, इन दोनों का सम जो है वो 0. इट मीन्स
इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमको समझ में आया कि जो मोमेंटम ऑफ द बुलेट मस्ट बी इक्वल्स टू नो मोमेंटम ऑफ गन, ओके, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में कुछ और रहा, बुलेट का इस डायरेक्शन में कुछ और रहा, बट दोनों मिला के क्या हो गए, जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि बोथ आर हैविंग सेम मोमेंटम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इट डजेंट मीन दैट दे हैव सेम वेलोसिटी। देखो मास दोनों का अलग अलग है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, तभी तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। अगर ये 2 है ये 3 है तो ऑब्वियसली ये 3 और ये 2 होगा, तभी तो वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। बट विच वन इज हैवियर, जो ज़्यादा वेटेड होगा, जैसे ये ज़्यादा गन वेटेड है इसलिए इसका वेलोसिटी ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी जिससे कि ये इसके इक्वल हो जाए। मतलब ज़्यादा वेलोसिटी बुलेट की है, क्यों? बिकॉज मास इज लेस, बट टोटल मोमेंटम इज सेम ना, बट बुलेट का मास ज़्यादा है सो डेफिनेटली वेलोसिटी विल बी लेस, ओके, बिकॉज बोथ हैव द सेम मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसका मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी इसकी कम हो गई, सो दैट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, प्रोडक्ट ऑफ दोज टू इज इक्वल टू ईच अदर, अंडरस्टूड। सो दोनों को बैलेंस करके चलना है, इसीलिए ये हमको क्या दिखा दिया, हमको दिखा दिया कि मास दोनों, ये क्या होगा, इसका मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी, बुलेट गन की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, ठीक है। मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ओनली ना, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द गन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट, अंडरस्टूड। तो मतलब जितना जितना मोमेंटम, जो दो बॉडीज हैं जो जिनके मोमेंटम में चेंज हो रहा है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, जो बॉडी का मोमेंटम में इधर चेंज हुआ, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम इसका भी चेंज होगा, बट डिपेंड्स ऑन मास ऑल्सो। अगर जिसका मास ज़्यादा है दैट पर्सन विल एक्सपीरियंस लेस वेलोसिटी, और जिसका मास कम है उसका ज़्यादा वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा। जैसे एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों एक दूसरे को कोलाइड की तो मोमेंटम में दोनों के चेंज होगा, बट द ट्रक इज मैसिव देन साइकिल, मैसिव है इसलिए उसके वेलोसिटी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बट साइकिल की वेलोसिटी में बहुत चेंज होता है, बिकॉज दैट इज कंपेरेटिवली उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। या फिर दो बाइक्स अगर एक दूसरे को कोलाइड करती है तो दोनों की वेलोसिटी में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, दोनों का मास तो सेम रहता है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कहने का सिर्फ यही सेंस है कि बिफोर कोलिजन व्हाट द मोमेंटम दे हैड, कोई ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, कोई कम वेलोसिटी से आ रहा है, बट आफ्टर कोलिजन, before collision, what is the sum of both the momentum that must be equals to the momentum after collision. For example this one also, अब देखो रॉकेट प्रोपल्शन में ये होता है, जितना मोमेंटम चेंज हुआ, पहले दोनों का मोमेंटम जीरो था, रॉकेट का भी वेलोसिटी जीरो था और उसका जो उसमें फ्यूल जो होता है, गैसेज होती है, उनका वेलोसिटी जीरो था। सो अब जितना ही जब ये मूव नीचे करता है तो व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। अब इसका मोमेंटम चेंज हुआ क्योंकि ये मोशन में आया, तो ऑब्वियसली इस मोमेंटम का जो चेंज हुआ इसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन क्योंकि कंप्लीटली स्टार्टिंग में वो क्या था, टोटल मोमेंटम जीरो था, तो पूरा दोनों का मिला के जीरो ही होना चाहिए, सो इट विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों को सम करेंगे तो ऑपोजिट ऐड होकर क्या हो जाएगा, मान लो इधर 10 हो गया, इधर 10 हो गया मोमेंटम, ये नेगेटिव है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। सो तो इधर मोमेंटम दूसरा चेंज हुआ तो ऊपर भी इसका मोमेंटम इसके इक्वली ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, मीन्स इट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इससे क्या होगा, इट विल फाइनली बैलेंस्ड, मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व इन ईच केस, अंडरस्टूड। अब देखो इसी तरह से दिस वन इज ऑल्सो, अ बोट में एक पर्सन स्टैंड खड़ा होता है, so when he jumps from the boat then what he jumps in forward direction, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो बोट क्या होती है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ठीक है, बिकॉज वो जंप किया बोट को पुश करके, इस डायरेक्शन फोर्स लगा के आगे जाने के लिए, और बोट क्या करती है, उसको पुश करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जांपल में मैंने बताया था दैट पर्सन इज एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर, व्हाई, बिकॉज ही इज अप्लाइंग फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन on the ground and he is experiencing a force in forward direction. So see overall momentum जो होता है finally conserve होता है। सारे examples जो हैं momentum के हैं। Some more examples are also there if you want to I will explain in live classes, but up to here in your book this much only given, so I hope it is already very lengthy video, so we will continue in another video, okay, but this chapter is already over,
So if any kind of doubt you have, you can ask from me in comment also, in live classes also. So thank you, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो. All of you take care. Bye bye.